ओके, हाँ अच्छा हो गया वही यार। नाइस। ओके या रिकॉर्डिंग फुल। या वी नेवर थॉट दिस इज पॉसिबल। हाँ तो लेट्स स्टार्ट लाइक फ्री पार्टिकल ऑनवर्ड्स। तो फ्री हम्म। पार्टिकल मतलब क्या कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, पूरे स्पेस में एक पार्टिकल पड़ा है बस, एंड मतलब बस वो टाइम पास कर रहा है, v इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर। तो हाँ I like copy paste a lot of stuff from this thing, uh, कूल Griffiths, कूल for saving कूल। time. Cool. तो दिस इज उसका फिर श्रोडिंगर इक्वेशन v इज इक्वल टू जीरो डाल के एवरीवेयर। हाँ यस। इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे, y इज इक्वल टू a e to the minus I kx and plus e to the I kx. So, अब like what's so sort of special about this? Um, so let's all this is phi of x, right? So let's write the actual phi, phi of x comma t, and we just do that by multiplying the time ka coefficient, no? So that is wait, I just copied it. Coefficient, nahi, I Wait, meant time you dependent. can you give me share edit authority for this thing? मतलब like you control my mouse वैसा. No, no, no. I can also edit in the OneNote that you are using. Like I can share your OneNote. Oh, okay, then we can use Microsoft Whiteboard. हाँ फिर white board use करते हैं ना, that will be easier. Yeah, wait, I'll send you this. Wait, no, no, no. OneNote का syncing will be faster क्या? Than white. नहीं No, नहीं, no. I Whiteboard don't का think syncing. OneNote में वो available है live thing. हाँ live I don't think it will happen. Yeah, you can present it I guess. Wait, I'll stream up Whiteboard. Hmm. Yeah. Why is my computer so slow? Whiteboard is way better man. ये पहले क्यों नहीं ढूंढे हम लोग? I know, right? Yeah, why were we stuck using Jamboard? I mean, Jamboard was also nice, but yeah. Hmm. But Whiteboard, I guess, is a little inconvenient. मतलब, yeah. किसके रेस्पेक्ट में? Like, मतलब वो मेल आईडी लिंक करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है. It takes a little time to load. Wait, you don't use the app? Yeah, I do use that. अच्छा, are you in? Okay. Join this board. 5 बज गए क्या अभी? Yeah. No. No, no, no. चार बज गए. Wait, so which whiteboard is this? I'm so confused right now, man. मेल में आया रहेगा तुझे. मेल आएगा क्या? बट हम्म. इधर व्हाइट बोर्ड में भी तो ज्वाइन आने का ऑप्शन देना चाहिए मेरे. हाँ आई एम हियर, आई एम. Oh, okay, cool. Wait, no, you're not. यस 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 आई एम No, you're not. हियर. आई एम अभी हियर. तुझे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? अभी मेरे को psi x, t a e to the power ओके I ओके, k. cool cool cool. हाँ.
हाँ तो हम लोग ने वो टाइम डिपेंडेंट पार्ट मल्टीप्लाई किया लाइक इस वाले पार्ट से एंड इस वाले पार्ट से एंड Hmm. we got this entire expression. So Yep. if you notice wait, is there a laser thing in this? No, there's not. If you notice this part and this part, it's like general wave traveling ka form, like one wave going to the left or right, right? Hmm. बिकॉज अगर ये कांस्टेंट रखना है तो लाइक टाइम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसमें टाइम बढ़ेगा तो ये घटेगा. So like this represents a wave traveling to the right, this whole thing traveling to the right, and this Hmm. represents this whole thing traveling to the left. So we know कि the solution to this free particle is just a wave traveling to the left or right, और उसका superposition कुछ. That is what we have till now. So now let's try to like solve it further, like a and b का value क्या होगा and all. So if you Hmm. try to normalize this, तो normalize करने के लिए you do phi star and का integral, and in this case that is just one, like okay, wait, before that actually uh, like we can consider this to be just a e to the I k uh, x. हाँ, तो we can just consider it to be this thing where k can be negative. Like इधर हम लोग k को positive पकड़ रहे थे because k was हाँ. 2me by h square का root, positive हाँ. root, but we can consider the negative root भी, right? So in general हम लोग ये लिख सकते हैं. It's the same as this. Okay. हाँ. Wait. हाँ, Original function क्या था free particle का? What was the original equation? और this. Uh, नहीं. The original equation Schrodinger. H hat square by 2m d square psi by dx square is equal to क्या था? E psi. E psi. This was the thing, right? What are you writing with? iPad. Ah, okay. हाँ ये है? था, yes. Yeah, the handwriting is cool. ओ हाँ. Yes. हाँ तो ये एक था. And the second thing that we had was क्या होता था? माइनस आई एच हैट डी psi by dt is equal to E. E, ये था हाँ, क्या? yes. I wrote the correct equation, right? Yeah, Are you sure? just like sign का गड़बड़ हो सकता है. Let me just confirm. हाँ. Uh, d d psi by dt is equal to I h psi. By dt is equal to I what? Oh yeah, it's not constant. This is इधर भी एक आएगा. Uh, yeah. Oh, F. Wait, this is minus I H hat, right? नहीं, that is plus. Are you sure? Yeah, that I'm sure. मैंने check किया. Why does this look feel weird?
1 second. I mean end expression में तू I नीचे लेके जाएगा तो वो फिर माइनस आ जाता है. Maybe you've seen that, that's why. अबे मैं हर बार भूल क्यों जाता हूँ. Let me look at the Schrodinger. I wanted to read the original paper of Schrodinger. I always forget that. Yeah, it's IH hat, right? हाँ. Cool. सही है. Yeah. So you got why I wrote. अच्छा ये मैं just लिख देता हूँ psi of k. So you got why I wrote like ये transition तुझे समझ आया क्या? It's just like um, psi is a superposition of a wave traveling to the left and a wave traveling to the right. So I just generalized it to a wave traveling to the left or right based on k का value. So if this is a solution for say k is equal to -1, um, हाँ. so I can always Basically, write xi is equal to this thing, right? And it would be equivalent to sort of this thing. yeah. Uh, So for every k solution that exists, a solution k minus k will also exist. uh, Right? Can I interpret it that way? yeah, yes, you can. तो हाँ ठीक है इधर तक हम लोग ने लिख दिया अब still we haven't done anything so far we still have to like normalize it and all so now if we try to normalize it phi star phi dx is equal to तो इधर आ जाएगा a square and ये पूरा thing 1 ही हो जाएगा right because complex conjugate लेंगे तो मतलब ये माइनस आ जाएगा and it will just be 1 dx हाँ. सही. and this should be equal to now 1 and इसके limits है minus infinity to infinity so obviously a has to be 0 or not rather not 0 some value really close to 0 so basically इसे normalize नहीं कर सकते a अगर a 0 हुआ तो that means मतलब ये exist ही नहीं करता ना इसका कुछ point ही नहीं है so like we'll say that it's not normalizable a is some value really close to 0 this is pointless and like intuitively it makes sense right अगर एक Yeah. particle is free to exist anywhere उसका एक जगह find करने का probability तो will be 0 ही Yeah. so um, so now what we'll do is Acha, so now we don't have any restrictions on the particle K energy, right? Yeah. And K is equal to this value. The Yes. K is basically almost like energy dependent, whatever. So K हाँ. can take any value from minus infinity to infinity. Yes. Like I know it doesn't make sense to have like negative infinity energy, but theoretically you can say that it has like um, any value from minus infinity to infinity. हाँ. So now uh, एक ऐसा भी wave function exist करेगा which is the integral from negative infinity yeah this wait don't mind this for now Okay. What are you trying to do exactly? yeah wait I'll tell you तो हम लोग को ये एक फॉर्म मिला था वेव फंक्शन का एंड लाइक दिस एग्जिस्ट फॉर एनी के राइट हम्म. हम्म. तो मैंने क्या किया आई टुक ऑल पॉसिबल केस सिंस मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड उनको सुपरपोज कर Psi, दिया so psi of k is the corresponding coefficient that you have for the corresponding k, right? Huh? यस यस एग्जैक्टली हाँ No. तो दिस इज अननोन This टू मी is राइट the नाउ coefficient. Yeah. हाँ करेक्ट
Now you'll try to do a double integration जैसा thing क्या? No, I'll do a inverse Fourier transform. But wait, that comes a bit later. Like I'll just explain you कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं. मेरे पास इसका proof या anything नहीं है. But so basically, I know that मेरे individual xi of k are non-normalizable. Yeah. But if I superpose infinite waves on top of each other, then Hmm. मेरा एक point को find करने का probability will be some finite value. What does इसका it proof mean to नहीं है, superpose but infinite waves? What does it mean to actually superpose infinite waves? I don't understand. I mean it's like in any state there are no restrictions, right? So it can be in any Yeah. state basically. मतलब it's like saying कि मेरा ball है एक. Now I don't know which So you are direction it is saying going in. कि अगर so a free particle cannot have a stationary state. A free, yeah, that is exactly what I'm saying. Its stationary states are non-normalizable. Like stationary state mathematically है, but उसका कुछ physical meaning नहीं है. Yeah. So like even I don't understand इसका proof or anything, but like the intuition is that only कि infinite waves को superpose कर दिया, then at one point there will be some finite probability of finding the particle. Okay. So Like अगर I know that normalizable is a state. bit unclear, but No, like that actually makes sense. So अगर normal like एक particle अगर free है, you cannot necessarily have an idea of a stationary state, right? The particle will just keep on roaming around. yeah. So there is no idea of a particular stationary state where the particle ka, like for example du by something is zero or like doesn't make sense actually. Huh. Hmm, exactly. Hmm, yeah. This one is cool. Okay. Okay, huh. So now basically now you claim, मतलब I claim that this entire thing is normalizable. So मतलब ये तुझे समझ आया क्या दो? Are you convinced कि ये normalizable होगा? हाँ. कैसे? Because I am not convinced myself. Wait, you are not convinced कि ये normalizable होगा? No, I Okay, just have so like a little intuition कि ठीक है infinite waves को superpose कर दिया तो maybe होगा because like amplitudes okay, so add up and all. Q होगा because it has to be. That is sort of the intuition. Because it can be in any state, right? And Hmm. being present in any state, इसका like I have a feeling it will sort of make a delta function जैसा significance. Does that make sense? No, Then I'm wrong. I don't know. Basically, it has to be normalizable, right? Because I mean stationary state normalizable नहीं होना makes sense because the particle cannot be in a stationary state being free because that Hmm. is just Yeah, contradictory. yeah, exactly. Huh. But like effectively particle जहाँ भी present होगा there will be a superposition of a multiple possible stationary states always. That thing has to be yeah. It can be anywhere at any time, but overall wave function has to be like normalizable. Yeah. Hmm. Anyways, तो इसका Fourier करेगा ना? Okay, that I guess makes sense. हाँ, तो मैं मतलब I'll just take t is equal to 0 for my objective is to find phi of k right now. So I'll take Hmm. t is equal to 0. So this thing becomes
ये 1/√2 pi, I don't know why it exists, it just exists for convenience. Wait, we can E, ask in TRG na for a better guidance regarding this. yeah, right. Is the derivation there in Griffiths? No. Wait, but किसका derivation? ये x,0 जो भी लाया तू x,t जो भी लाया x,t का जो एक्सप्रेशन लिखा तूने ये this thing. हम्म Derivation नहीं है exactly, but ऐसे ही explanation given है. I mean, the entire part makes sense. I guess 1/2 pi is just a measure that you were adding because it'll give back a significance later. Oh yeah, that is just for convenience. Like phi of k तो हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं ना, मतलब हाँ multiplied by some हाँ constant exactly and all. exactly वही बोल हाँ रहा हाँ था वही बोल रहा उसका तो वो लाइट. था other than that that's fine. हाँ तो we get this and like inverse Fourier transform करते हैं and we basically exchange this wait 1 second expression given है. मेरे को फूरियर ट्रांसफॉर्म भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. Yeah, same dude. It's actually seems so powerful. Yeah, this thing. So either हम लोग का small f was psi and capital F was this thing. So given so हम लोग को phi of x तभी मिलेगा जब initial xi given है. So what you will do is that you will bring about psi of k is equal to 1/2 pi minus infinity to infinity uh, psi of x to the power minus I k x dx यही आएगा ना. Exactly, हाँ. And this is at x at t equal to 0. t is equal to 0 तो लाइट t is equal to 0 तो लाइट हाँ वो तो उसका like significance है like from what I understand it's like एक uh, सेकंड. हाँ हाँ क्या बोल. किससे बात कर रहा है. श्रेयस से. श्रेयस तो ऑफलाइन है. हम लोग टीम्स में डिस्कस कर रहे हैं ना. रिकॉर्ड कर रहे हो क्या. हाँ रिकॉर्ड भी कर रखे हैं. सर गुड नाइट. ओके तो सो रहा है उसे अभी. मेरी तरफ से भी गुड नाइट बोल दे. ओके श्रेयस आल्सो सेज गुड नाइट. गुड नाइट. बाय बाय. बाय. हाँ कंटिन्यू. हाँ so like t is equal to 0 का मुझे ऐसा significance लगता है it's like वो particle तो it's like free right, it can be we have no information of that particle but if we're given कि at some particular point वो कौन से state में exist कर रहा था it's like a very concrete thing. मतलब अगर ये स्टेट में वो था मतलब ये स्टेट नॉर्मलाइजेबल है t इज इक्वल टू 0 वाला मैं बोल रहा हूँ उसमें था तो उसके हाँ बेसिस हाँ पर ही तुम लोग ये सब फाई एंड ऑल मतलब निकालो. लाइक इफ आई डोंट गिव यू सम इनिशियल स्टेट देन यू डोंट नो शिट अबाउट दैट पार्टिकल लाइक वो यस नॉर्मलाइजेबल है उसका थिंग या नहीं है. यस यस बट यस लाइक वंस आई से कि t इज इक्वल टू 0 पे नॉर्मलाइजेबल था देन तो वो मतलब होगा ही नॉर्मलाइजेबल स्टफ लाइक दैट. या हाँ, basically then you can find phi of k by that and then you have the general solution एक of बार that. दिखा कैसे फाइंड आउट करेगा तू. ऐसे ही I am given phi of I am given this value ना, I am given this function तो बस मैं इंटीग्रेट जैसा कर दूंगा. ये फंक्शन हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ ए एंड स्टफ राइट. नहीं ये फंक्शन इज लाइक मतलब ये हमें पता नहीं है वो प्रॉब्लम मतलब लाइक लाइक अभी इट्स अननोन वी कैन नॉट लाइक find a solution to that function. Like देन वो हाउ डू यू जो भी फाइंड अ सॉल्यूशन. प्रॉब्लम होगा उसमें दिया होगा कि से t is equal to 0 पे वेव फंक्शन ये था sin x सपोज. हाउ डू यू नो कि
t is equal to 0 पे क्या था? Like you do a measurement. How do you measure? Uh, good question. Oh, okay. Oh, yeah, good question. Hmm. Wait, what were the solutions? Oh, yeah, this. Hmm, good question. Okay. How do we even measure it? I have no idea. Like, okay, I guess. Okay, This is a very weird guess. Okay, but I'm guessing something like that होगा. So, say हम लोग का कुछ pre-existing wave function है. Okay, so say we are doing some experiment. हम लोग सर ने एक ऐसा setup है हम लोग का say particle in a box है. ठीक है. Now But that you can part. wait a action. Wave function is a mathematical construct, right? How do you even get that? हाँ You can just exactly. So मतलब हाँ मतलब मैं बस like example दे रहा हूँ. I don't know if it's like very clear, but like suppose मेरा एक setup है एक particle in a box में particle in a box का. So particle in a box का I know the possible मतलब solutions, right? उसका मतलब proper constraints and all है. So now हाँ तो उसके बेसिकली सॉल्यूशंस बताए. नाउ उसका फाई ऑफ xi of x at t is equal to 0 मुझे बताए. Now somehow in that experimental setup I turn off my like electric barriers and all या जो भी barriers थे, uh, and now suddenly the situation becomes equivalent to a free particle. okay. Now I guess I can like take xi of x at t is equal to 0 as जो पहले वाले solutions थे इनफाइनाइट वाला क्या था Uh, पार्टिकल इन अ बॉक्स वाला. एंड देन आई कैन uh, मूव ऑन टू से कि इसका क्या वैल्यू आएगा एंड अब जो फ्री पार्टिकल है उसका क्या सोल्यूशन आएगा, समथिंग लाइक दैट. इसे समझ में नहीं आया मत फिर से लाइक बोल एक बार तू तू पूछ रहा था कि xi ऑफ x at t is equal to 0 फाइंड कैसे करेंगे, राइट? हाँ 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 तो से मेरा ऑलरेडी कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसमें कुछ वेव फंक्शन आया था. ओके, ओके ओके दैट इज नोन कि तब वेव फंक्शन क्या है विदाउट मेजरिंग द पार्टिकल. इट्स सम स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट. अब मैंने एक्सपेरिमेंट के सब मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड ऑल है वो ही बंद कर दिए एंड द सिचुएशन बिकम्स इक्विवेलेंट टू अ फ्री पार्टिकल. ओके मेक सेंस आई गेस इट समथिंग मेक ऑन द सेंस मतलब आई नो कि सब मतलब मैं बंद करूंगा तब फ्लक्स एंड ऑल आएगा एंड वो सब असाइड बट समथिंग लाइक दैट. yeah nothing happens instantaneously but yeah हाँ okay. या I can still live with it I guess हाँ. till I find a better analogy in reality. Yeah, Yeah. I we should find a better analogy. So we have questions regarding we have two doubts. एक है the idea कि why is it ये why is it actually like normalizable, Hmm. and second idea is how yeah second idea is how do you find the wave function. Hmm. second doubt sorry. हाँ हाँ. बस बाकी सब तो हो गया फिर. Yep. Okay. So that's it. मतलब assuming you're given this thing, you can find out phi of k, and then you have the general solution. इससे. Yes. Hmm. So that was the free particle.
Oh, yeah. So another weird thing. Um, Hmm. so where is that? Huh. So free particle ka. So this psi of k represents like Hmm. one wave traveling here and there, right? So, Yes. and our general solution is like the superposition of all such waves with different, क्या बोलते हैं, with Hmm. different like wavelengths and all, हाँ. with different frequencies because k is different in everything. So, if you calculate individual waves का speed क्या होगा, that will be k square by 2m divided by k. So this hk by 2m. This is um, v of single wave. Let's call that like vq. But if you calculate the velocity of the entire matlab, particle as a whole, so like that would हाँ. be k plus p equal to total energy. p तो zero है, तो half mv square equal to so wait one second. K was equal to root 2 m by h square k by 2m h square k 2m. square by 2m. हाँ, Hmm. तो ये बराबर क्या है? हाँ, Hmm. हाँ, so v basically turns out to be hk by m from here, Hmm. plus Hmm. minus light. But like, how is it like basically इसका velocity is half of this thing, right? Hmm. So it Yes. just basically means that जो भी particle है, uh, Hmm. once it is like a superposition of all these waves, it's Hmm. that entire form of that particle is as a whole, it's traveling at double the speed of these individual waves. Like, like that is something interesting to notice. Wait, सिंगल वेव का कैसे निकाला? Go a little up. Single wave का ये इक्वेशन था राइट सिंगल वेव का. Yes. This is the frequency. Velocity. Yeah, And yeah, yeah. yeah, There is a velocity directly, right? huh. No. This is the frequency and this is the wave number. So, No, uh, no, no. hk by 2m is the velocity, right? हाँ, yes. हाँ, yeah. I mean, x minus vt होगा ना? हम्म. Yep. हाँ. Right. Yeah, so you just have individual waves का double. हाँ, cool. Hmm. Right. ये हाँ, so क्यों हो yeah. रहा है? क्यों Like, हो रहा what is है? this? How do you interpret this? Hmm. I'm not sure how. Why is it I just like two? I'll Why is throw it? in some random facts. Like in case of water, जो भी like water में the wave like particles like move up and down and all, and the हाँ, particles move and also like the wave as a whole move, right? Water में. yeah, So yeah. उस wave में उल्टा होता है. It's like the particle का velocity is half of the entire मतलब. Entire wave. हाँ. uh, no, sorry, wait, did I say उल्टा? Particle का Yes. velocity is Part, double of particle the particle का entire. velocity ज्यादा होगा wave से, right? हाँ, एग्जैक्टली. एंड इस हाँ. केस में उल्टा था. एक सिंगल मतलब इस केस में पार्टिकल नहीं, एक सिंगल वेव का वेलोसिटी इज हाफ ऑफ पूरे थिंग का वेलोसिटी. हम्म. सो लाइक वाटर के केस में भी ये होता है बट इट्स उल्टा. तो या दैट्स ऑल आई नो. एंड इन केस ऑफ लाइक तू अगर एक स्ट्रिंग लेगा एंड स्ट्रिंग के ऊपर ऐसा वो झटका देगा, तो दोनों का वेलोसिटी सेम. नो वेट, उस केस में तो पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होता है राइट. Yes, I guess.
Okay, I'm not sure. I don't know. But उसके इसके में भी कुछ आएगा. But yeah, basically like this happens in a lot of waves and all. So something interesting to look at probably. Okay, so that's it for free particle. अब क्या है? Now there is delta function potential, जो हम लोग ने We did it. already मतलब किया था. हाँ. It's the हाँ actually हम लोग ने पूरा ही किया था. Let's just use the exercise now. उसमें तो सारे चीजें होंगे by default. हाँ exactly. Yeah. Yes. उसके बाद there is. मैं recording Oh yeah. बंद कर रहा हूँ. अच्छा wait. Um, do you want to do finite square well? Finite spiral. हाँ कर दे. अभी Okay. क्या ना तू finite spiral. अभी क्या? You learned it right now, right? हाँ yeah. हाँ बोल दे. Like it's not something very special. It's just like um Just a finite spiral. yeah. This is like minus ये zero है पूरा potential. This is minus V naught. Okay, I'll try to solve this on my own. जल्दी. Okay. I mean नहीं जल्दी होगा नहीं. It's a bit complicated. But जितना भी But ठीक होगा. है try हाँ. But like I didn't really find anything special about this. But solution खुद से आना थोड़ा tough है. मतलब एटलीस्ट पता चल जाएगा कहाँ पे स्टक हो रहा Yeah. I mean, not conceptually. I mean, it's just a lot of math. मतलब equation solve नहीं होते वैसा. है. नीचे वाला -v0 ऊपर में 0. तू कूल. किधर कर रहा है फिर? हाँ ना मैं इधर ही लिख रहा हूँ. तेरे नीचे लिखना स्टार्ट कर दूंगा. हाँ. So I have minus h square by 2m d square phi by dx square is okay. Fuck. प्लस क्या था? You'll have to like do piecewise solution. हाँ. तो कैसे करूँ पीस वाइज? Like v x नॉट. x less than हाँ. minus a के लिए कुछ ले ले. अलग अलग इक्वेशन लिख. आई मीन x -a टू a तक के लिए ये होगा राइट. लाइक दिस फॉर द -a टू a तक का. So that will be minus v0 psi is equal to e psi. यही होगा ना? Yup. हाँ. So this will again give me a harmonic a simple harmonic motion जैसा solution, right? Right. Exactly. हाँ. This will just give me a SHM. SHM का फॉर्म लिख दे. Just post the SHM का फॉर्म. और meanwhile अगर 0 होगा तो भी like I'll just get two different forms of SHM, right? हाँ. वो L का वैल्यू इज Just k का value, right? That's it. हाँ या. मैंने L लिखा बिकॉज K उधर भी आएगा वो x लेस देन माइनस ए एंड x ग्रेटर देन ए के लिए. एंड ग्रिफिथ ने यूज किया है L, so like looking at Griffith के equations it could be a bit familiar. ये हो गया. And the second thing would be a sine 2me by hx plus b cos 2me by hx. यही आएगा ना? This will be the two cases. Wait 1 second. This is for minus a to a.
this for the other two boundary cases. मतलब इधर से इधर और इधर. हाँ right yeah. हाँ, so now you have piecewise solutions के बाद now how do you combine everything? Wait 1 second ये क्या हो गया वो कुछ नेगेटिव wait 1 second What the hell does that even mean? like E is negative ना तो I'm just thinking वो solution कैसे form में होगा What is negative? E And how do you know that E is negative? oh yeah we didn't discuss that part only ना हाँ तो uh, E एक्चुअली हाँ यू ट्राई टू सॉल्व इट लाइक ई नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों के लिए डिफरेंट Yeah. सॉल्यूशंस आएंगे बट हाँ नाउ यू विल कम टू दैट पार्ट ओके हाँ. So now I got wave function के forms, right? Now मेरे को हर पार्ट के लिए जनरलाइज करना नॉर्मलाइज करना पड़ेगा अलग अलग करके, right? So दोनों बाउंड्री कंडीशंस में it should give me the same value. So I guess E should be मिनट में पानी भर गया तो हेलो हाँ हेलो यो हाँ so what we'll have now is look सोचने दो. बाय द वे दीस लेक्चर्स दे विल बी लाइक ये पब्लिश किधर होंगे We can just download this and put it wherever you want. We can put it like a private video on YouTube if you want. नो बट लाइक डाउनलोड करने से पहले ये स्टोर कहाँ पे होंगे लाइक वेब डॉट माइक्रोसॉफ्ट आई मीन माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम नहीं माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम में स्टोर नहीं होगा तेरे को डालना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम में. तो रुक अभी लाइक खत्म होगा करेंगे तो किधर दिखाई देगा तेरे को. हाँ रुक ना. फुल या um, um, will it be zero at minus a and a wave particle? लाइक वेव फंक्शन ही जीरो है ऐसा बोल रहा No, right? है नो व्हाई डू यू से दैट uh, no, I just had a feeling sort of. No, it's wrong. uh,
What do I do then? इसके बाद करूँ क्या मैं? So हाँ वही, like things get a bit complicated. So one is कि you have to like apply more conditions and all. ठीक है, वो continuity का condition and all तू apply कर ही सकता है, like x equal to minus a पे वो continuous होना चाहिए. So put minus a का value and equate everything and all. Same with x equal to a, वो सब ठीक है. But like Also माइनस ए और ए में सेम वैल्यू होनी चाहिए क्या दोनों का? सेम होना obviously. चाहिए ना? हाँ हाँ continuous तो हो गई. तो it cannot be sin, right? It has ऊपर वाला has to be cos, right? हाँ, Why? ऊपर वाला has to be cos, right? Why? I mean a sin रूट ओवर 2mh, मतलब x को माइनस से बैठा देता हूँ Hmm. ऊपर, तो that should be equal to wait, साइन का वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू मेरे को जीरो आ रहा है, बड़ा ए वाला, क्यों दो? बड़ा आई मीन एक्स के एक्स में माइनस ए बैठा दे और ए बैठा दे एक बार, still be a sin minus something minus x plus b cos x is equal Okay, okay. Wait, to but a there sin. is, okay, okay, I get it, I get it. But wait, there is one thing you're mistaking. See, this is the solution for this thing. Like तूने ये एक साथ लिखा है for minus a, like less than minus a वाला, and हाँ, no, wait, wait, एक wait. सेकंड मैं Sorry, वॉशरूम sorry, जाता हूँ, not this, not this. हाँ. एक हेलो, Hello. हाँ क्या हाल? ओके हाँ, उसमें लाइक प्रॉब्लम क्या है, यू वर
like you are taking A and B for everything, right? But that's not true. Like हर equation के लिए एक अलग coefficient आएगा. Oh, okay. हाँ. Wait, CF and CD should be same, right? C, C, F and C. What? C should be equal to E and D should be equal to F, right? No, no, not necessarily. But aren't they exactly identical? The situations. Hmm. Serious? Mm, नहीं, because Because like ओके फाइन एक बार देखते हैं ना कहाँ पे जाता है तो इसको. hmm. I mean yeah, like symmetry तो है that, but Let's try the continuity thing ना. hmm. When Yeah. x will be equal to a, नीचे वाला and third वाला and first वाला equation should make sense, right? Yeah. When x is equal to a, Hmm. third वाला and first वाला equation should be equal. हाँ, yeah. Which I don't know how we will actually equate. I mean, like don't bother because there will be a lot of equations that you'll face there. Basically, अच्छा हाँ, Griffiths screen share करना. हाँ, cool, yeah, Share your overall screen एक बार. yeah. Like everything, the computer पूरा. Uh, where is my entire? Yeah, yeah. You can see it, right? Yes. हाँ, so ग्रिफिथ ने पहले ही बोला था कि ई ग्रेटर देन जीरो एंड ई लेस देन जीरो के दो अलग अलग सोल्यूशन आएंगे. तो Hmm. उसने डायरेक्ट मतलब पहले ई लेस देन जीरो का ही सोल्यूशन फाइंड करना चालू किया. सो Okay. ही डिड ऑल दैट ब्ला 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 किया एंड इधर तक वो आ गया. सो टिल दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट हम लोग का सब सेम है ग्रिफिथ जैसा. बट फॉर एक्स लेस देन माइनस ए वी नो की एनर्जी नेगेटिव है, राइट? So Hmm. this k will be a real number, Hmm. not so this is not complex, right? So this Yes. will जो दूसरा टर्म था उसमें वो shoot up होएगा. So it's not हाँ. normalizable. So that's why this has to be that other term is zero. So ये आ गया for x less than minus a. For x greater than a again यही आ गया but with that minus k. And Hmm. बीच में it remains in general this thing. And Okay. a is वही जो अपन ने डाला था उधर. L, I mean, sorry. So, अच्छा हाँ, there is one thing, one property that is used here. हाँ जो वही मैंने बोला ना कि वो मेरा a 0 हो जाएगा, तेरा सिर्फ b रहेगा. नहीं, वो जीरो नहीं हुआ है. Like I'll tell you why. या नो Okay, हाँ, गो kind of गो zero हुआ है. काइंड See, ऑफ नहीं, zero ही हुआ है. नहीं हाँ, देख, तू एक बार ना पहले तू व्हाइट बोर्ड पे चल एक बार. हाँ, यस, मेरा a 0 है, you mean मेरा C? b का नहीं, वैल्यू है. A, okay. नो a. नहीं, यस. A यस. zero नहीं है. Wait, I'll tell you why. I'll tell you why. Uh, it's not like it is zero, but it's not exactly zero. See. Uh, there is a theorem कि अगर पोटेंशियल इवन होगा हाँ.
it's an even function, तो फिर wave function, like the stationary wave function has to be Should also either be even. even या odd. Wait, what? All functions are either even or odd, right? I mean, not No. like that, but yeah. I mean, not like that, but Like in the end basically potential अगर even है तो probability distribution को even होना पड़ेगा, but we can't say कि wave function even है या odd है, it's either one of अच्छा, okay, those. okay, okay, तो हाँ, basically दो मतलब separate solutions निकलेंगे, one is where the wave function is odd and one is where it is even. ऐसे मतलब दो हाँ, separate find out कर सकते हैं. okay, In the end it will be a superposition of everything, so वो बोल हाँ, नहीं सकते क्या होगा, but at least the stationary states will be even या फिर odd. तो इन्होंने क्या हाँ, किया है कि इसने even वाले wave function के लिए solve किया है पहले, and if you हाँ, notice like the limits also change, like now it is not minus a, it's 0, and then this is like just the uh, like even part of this whatever. what is this? Yeah. So basically, Like, that a thing was not exactly 0, but since we considered different solutions, we made it 0 for this solution. एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ है? ऊपर जा थोड़ा सा, और भी ऊपर, और भी ऊपर. आई वांट टू सी द डायग्राम. You want to see the या diagram? या एक सेकंड. तो लेस देन जीरो के लिए साई ऑफ माइनस एक्स कैसे बोल दिया ये लोग? ओके, 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 ओके. द We're एंटायर वेव considering फंक्शन. it an even या, function, no? the entire wave function has to be even, not just the ये Uh, वाला part, but the पूरा wave function. so like once you solve for this now, you'll have to repeat the process and take d is equal to 0. Wait 1 second. हाँ, so mod will always be equal, right? Hello. Hello. Okay. So you got what we did here, right? हाँ, So अगर ये odd function होता, which is like we'll have to solve again for odd, so that would be c sin lx, and this would be minus psi of minus x. okay. Makes sense, right? हम्म. Yeah. So we basically वही अब ये even पकड़ के पूरा solve किया है, वही सब boundary conditions डाले and all, and ये कुछ तो गड़बड़ आता है वो जो भी solve किया है, and in the finally e के values आ जाते हैं. Makes sense, makes sense. Yeah, that's cute मतलब. एक बार फिर से दिखा, एक बार फिर से दिखा. एकदम ऊपर चला जा. हाँ, रुक. हाँ, हाँ, हाँ. नीचे से जा. या स्लोली नीचे जाते रहे. कम टू द पीसवाइज डेफिनेशन ऑफ साई, जहाँ पे ऑड फंक्शन पकड़े हैं, इवन पकड़े हैं. ओके, सो दिस इज वी आर कंसीडरिंग इवन. उसके बाद वी गेट अ सीरीज ऑफ इक्वेशंस. नीचे जा, और भी नीचे जा. वी इक्वेट एफ एंड डी and find a value. अच्छा इधर they have only two equations because like negative side का तो हम लोग ने even function ही पकड़ा है, तो ये दो equation. Why does d psi by d also has to be same, equal?
because it has to be okay, d psi by Like the dx has slope. also to be continuous, right? Yeah, it's like the वो श्रोडिंगर इक्वेशन में वो वाला टर्म होता है ना, डबल डेरिवेटिव वाला. So for that to Mm-hmm. exist, this has to be continuous. But Mm-hmm. this thing is only not valid at infinite potentials. Otherwise, it is always valid. That makes sense. But infinite potentials पे continuity still maintain होता है. That is like there we don't हाँ. have choice. Yeah. ये सब अब whatever is written from here onwards ना ये, so that all is like a mathematical manipulation to solve for E. Wide, deep well. Now I have random stuff. Yeah. Shallow, narrow well. Why is E minus though? अभी भी तक समझ में नहीं आया. हाँ तो अब अभी हम लोग ने माइनस मतलब नेगेटिव ई के लिए कंसिडर किया. Also अब हम लोग और तो पकड़े ही नहीं, इवन लेके कर दिए सब कुछ. हाँ तो और तू पकड़ेगा तो भी समवॉट सिमिलर सोल्यूशन ही आएगा. एंड देन योर जनरल सोल्यूशन इज जस्ट अ सुपरपोजिशन ऑफ एवरीथिंग. ओके. लिए हैं क्या हम लोग सुपरपोजिशन? दैट इज सपोज. ये क्या 2.28. 2.28 कहाँ पे है? इधर देखा. नीचे जाते रहे, नीचे जाते रहे. Let's keep on continuing. हाँ ओके. हाँ तो now they have considered the case. Wait, you're welcome to normalize. हाँ, now they're going to see like e greater than zero के लिए क्या होता है. हाँ I हाँ हाँ haven't हाँ. read that yet, so I don't know. वो बाद में पढ़ लेंगे I guess. Let's read on ना, क्या हो रहा है देख लेते हैं. Okay, cool. Wait, 1 second. Wait 1 second. I'm closing my stream and putting it on again. Is it visible properly? Yes, yes. हाँ. कोई डिफरेंस क्या हुआ समझ में नहीं है. मैंने स्क्रीन 2 को स्क्रीन शेयर किया because स्क्रीन 1 पे I can use my graphic tablet white rough work के लिए. ओके. My like that graphic tablet का pointer doesn't work on the second monitor. मेक सेंस. वेट, तू एनोट कहाँ पे कर रहा है बाय द वे? Not मतलब लाइक नोट्स कहाँ पे ले रहा है? वो white board में just like rough work कर रहा हूँ, notes नहीं ले रहा. Why aren't you using ये for that? वन नोट OneNote. for that? हाँ मैं Yeah. OneNote ही यूज करता हूँ but अभी वो खुला था so. ना, you can embed OneNote में documents, right? Oh yeah. Oh You can yeah. embed the entire PDF and you can keep track of your own notes there. Holy shit. Oh yeah, why didn't I think of this before? Oh god. Try करो. Yeah, I can do that. Uh, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ फिर. हाँ cool.